यस, मेरा नाम गॉडविन है, चौरा का रहने वाला है। मेरा नाम टाइटस पीटर है और ब्लू अभी का फर्स्ट कैप्टन ग्रेट निकोबार। हम लोग कल राहुल गांधी जी से मिले थे, तो उनका वहाँ हमें जहाँ वो उनका रेसिडेंस, तो हम लोग यही बताया हम उसका कि जो प्रोजेक्ट हमारा जो एरिया में आ रहा है, तो हम लोग हमारा जो ट्राइबल जो विलेज है तो उसमें जा रहा है, तो उसको बताया कि बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाले जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो हम लोग का जो जिस तरह हम लोग रहते थे उस तरह हम लोग नहीं रह पाएगा अगर हम लोग अपना बस्ती वापस पुराना बस्ती वापस नहीं जाने से। तो उसको बोला, हम लोग बताया कि इस तरह प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग को, इसलिए हम लोग अपना ज़मीन नहीं देने मांगता बोला सर को, राहुल सर को, हम लोग अपने ज़मीन नहीं देने, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से जो हम लोग का जो दादा परदादा लोग जो था, तो जंगल से तो हमेशा हम लोग लगाव है, क्योंकि हम लोग नुकसान नहीं कर रहे, जो भी एनवायरनमेंट को हम लोग नुकसान नहीं कर रहे। अगर लकड़ी काटता भी तो हम लोग सिर्फ अपना घर बनाने के लिए हम लोग ये काटता है, ऐसी बेकार हम लोग नहीं करते, ना हम लोग उसको बिक्री करता। तो सोम्बेन लोग भी है, सोम्बेन लोग भी उसमें इसमें लोग अभी हम लोग को क्लियरली नहीं पता था कि आप लोग का कि उन लोग भी इस प्रोजेक्ट में अफेक्टेड है। तो सबसे पहले लोग मेरे को बोला थी, हमारा ये सबसे पहले हीयरिंग हुआ था 2022 जनवरी को हुआ था, तो हम ये फर्स्ट वन ये आप लोग ये प्रोजेक्ट बनाएगा तो हम लोग का नुकसान नहीं, हम लोग का ट्राइबल विलेज का हुआ, तो उन लोग बोला नुकसान नहीं होएगा, आप लोग का विलेज नुकसान नहीं करेगा। एक्चुअली लोग जब सर ने पूछा था उन लोगों कि ये जो प्रोजेक्ट ये लोग शुरू कर रहे हैं कि मतलब ट्राइबल को इफेक्ट नहीं होना करके, मतलब तो उन लोग ने जवाब में ये दिया कि मतलब इसमें देखा जाएगा कि ट्राइबल का कोई नुकसान नहीं होना करके उसमें, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में पता चला कि इसमें ट्राइबल लैंड्स का भी अफेक्ट है। और ये तो आज हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग यहाँ आया, आप लोग के साथ भी थोड़ा ये सब बात बताने के लिए टाइम मौका भी मिला है, क्योंकि एक्चुअली आज तक तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग कई बार लेटर बनाया, किसी आवाज़ भी उठाया, तो हम लोग को उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो हमको ये हम लोग लगा कि ये अच्छा चीज़ है कि हम लोग यहाँ आए, आप लोगों के साथ शेयर करा। पहले भी कई बार आप लोगों से मतलब बात भी हुआ है, तब भी आज तक कोई जो हम लोग लेटर दिया वाला का रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। जिसने एक बार एनओसी साइन किया उसको भी विड्रॉ भी कराया, उसका भी रिस्पॉन्स भी नहीं मिला हम लोग को। हम लोग ये नहीं चाहते कि वो जो एनओसी सर ने साइन किया उसका फ़ायदा उठा के वो लोग प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि ऑलरेडी सर ने विड्रॉ कराया। एक्चुअली शॉम्पेन अफेक्ट हो या ना हो, लेकिन 100% अफेक्ट है। शॉम्पेन लोग का भी एक रूल्स रहता है, हम बताता कि शॉम्पेन लोग काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, क्योंकि शॉम्पेन एक प्रजाति का नहीं रहता, बहुत ये रहता है, अलग अलग रहता है, और उन लोग का अलग रहने का अलग अलग तरीका रहता है, उन लोग का रूट अलग रहता है, उन लोगों का मतलब रहने का जगह अलग रहता है, और बोलने से रूट बोले आने जाने का रास्ता वो लोग कभी एक ही रास्ते में नहीं जाता। तो इसमें देखा जाए कि उन लोगों का क्या इफेक्ट है। अगर प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट कई स्क्वायर मीटर बड़ा है, हम भी नहीं जानता, क्योंकि आज तक हमको पता भी नहीं कि कितना बनेगा करके, और उन लोग प्रोजेक्ट अगर कल को जंगल काटेगा तो वो शॉम्पेन लोग भी थोड़ा अंदर चले जाएगा, और वो किसी न किसी का रूट में आएगा, तो क्या उन लोग के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता था, जो पहला जमाना में भी था उन लोगों के साथ उस तरह लड़ाई। कहीं बुजुर्ग लोग से भी सुना हम लोग, जो उन लोग का टाइम से रह रहे हैं वो एरिया में। इन लोग ना एक जगह भी नहीं रहे जहाँ हम लोग को खाना भी, जहाँ फल केवरी मिलता है खाने पीने का, तो इन लोग फिक्स नहीं रहता। उन लोग सोम्बेन लोग नाम है, लेकिन हम लोग भी सोचा भी नहीं कि उन लोग को भाषा अलग अलग, कि न 6-8 ग्रुप है, लगता है ग्रुप है इन लोग का, कम से कम 50 कुछ 200-100 कुछ ऐसा है। टोटल मिला के सर ऐसी तो अंदाजा इन लोग जो EJS लोग इन लोग का जो पॉपुलेशन लोग काउंट करते 200 या 300 इन लोग बोलता है, लेकिन लोग एक्चुअल अप्रोक्सीमेट इन लोग पॉपुलेशन कोई किसी को आउट ना मांगे, है बहुत लोग, सिर्फ अप्रोक्सीमेट लोग बताता कि 300, क्योंकि जंगल में ऐसा लोग है जो आज तक अभी निकला भी नहीं, और उन लोगों को डेंजरस भी नहीं बोल सकता है, लेकिन है, असल में है, कई साल से हम भी सुना है कि लोग है। तो अभी तो
खत्म तो नहीं होगा, है वो रहेगा होगा। कोई 2 जगह पे गवर्नमेंट बना, सुनामी के बाद सेंटर बनाया लोकल रेवेन्यू जहाँ कैपिटल पे राजीव नगर में, इनका जो पुलवावी का सेंटर बनाया, क्योंकि रेवेन्यू लैंड है उसमें सिर्फ सेंटर दिया है ना, कुछ लैंड दिया प्लांटेशन करने के लिए। और जो चिंगे जो है जिंगे पे तो आपका रेवेन्यू लैंड है, वो भी सिर्फ सेल्टर बना के और कुछ प्लांटेशन में। इसलिए अभी हाल ही में हुआ चिंगन वाला जो न्यू जिंगन में एक कैप्टन उसने मतलब इसके लिए अपील किया था उसका प्ले ग्राउंड के लिए। तो उन लोग ने कहा कि उन लोग के लिए वहाँ में प्ले ग्राउंड बना के नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ सरकारी लैंड है। अगर कल को वहाँ वो लोग हमेशा रहेगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा? अभी कुछ भी पूछेगा तो बोलेगा रेवेन्यू लैंड है, रह के क्या फायदा है? जबकि अब आज से सुन रहा है कि मतलब जो भी करना है सब रेवेन्यू लैंड है या तो सरकार से पूछ के करना है, फिर वो तो अभी से दिख गया वो सब, तो फिर वहाँ रह के फायदा क्या? इसलिए तो हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोग को अपना लैंड वापस जाना है, मतलब जहाँ रहता था वहाँ जाना है और कुछ नहीं। मैं दोनों कैप्टन साहब से सहमत हूँ जो उसने बात बताई। मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं भी एक निकोबारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे कम्युनिटी में कोई तकलीफ़ होता है तो हम लोग भी तकलीफ़ होता है। जैसे कि कैप्टन साहब ने कहा कि उस लोगों को अफेक्टेड है, अगर वो प्रोजेक्ट से अफेक्टेड है तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो उसको जो जेन्युइन बात है, अगर उस लोग को तकलीफ़ हो तो उस लोग को बात सुनना चाहिए। जो भी तकलीफ़ है उस लोग पहले सुन लेना चाहिए। अगर आप उसके बाद सुनेंगे तो उस लोग यहाँ तक नहीं आएंगे, पहले अगर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और भी हम लोग तो दूर आ गए ना, फिर भी हम लोग जो प्रोजेक्ट का जो इफेक्ट है, डिसएडवांटेजेस है, तो आप लोग को सबको पता होगा प्रोजेक्ट का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन मूव ऑन करते, सरकार मूव ऑन करे तो हमें कुछ ना कुछ हम लोग के लिए सोचना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड गिव एम्प्लॉयमेंट टू द फैमिली अफेक्टेड। जिसका भी लैंड जा रहा है, जो भी जा रहा है, कुछ ना कुछ इसके लिए सोल्यूशन देना चाहिए। दे शुड गिव सम सोल्यूशन टू द अफेक्टेड फैमिलीज जो भी अफेक्टेड है। जैसे ज़मीन जिसका जा रहा है उसको कुछ कंपनसेशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। A closure to overall view of the main agenda of this here. First of all, I thank you everyone to be present and hear out the voice of the tribal communities from the Andaman and Nicobar group of islands. I'm one of the tribes communities from the Great Nicobar, and the main purpose of us here is, as you know, that see, we are not completely opposing this project because we understand the importance of it. It is for the development, maritime development. We all know that. But it is. We also should not forget that it's bringing risk to the lifestyle of the current tribal communities here. Now, not everyone are aware of the entire how the Andaman and Nicobar group of islands is divided. The entire Andaman group there are two parts: the Andaman group and the Nicobar group. The Andaman group, there are a total of 6 indigenous tribes that belongs to Andaman and Nicobar group of islands. So if I talks about towards the Andaman, there are 4, which they are called the Negrito tribes, and the southernmost, like the Shompenes and the Nicobaris, are Mongoloids. We are parts of the Mongoloid group. We are very unique of our kind. You cannot destroy us. So if I talk about the northern Andaman, there are 4 tribes: the Jaravas, the Ongis, and the Shompenes, and sorry, not the Shompenes, Sentinelese, and the Great Andamanese. Everyone are aware of the Sentinelese. They are declared as one of the most isolated, dangerous people in the world. There is no doubt about it. It's everywhere, on the internet, on the study books as well. Now, if I talk about the Great Nicobar, there are 2 tribes that resides here: the Shompenes and the Nicobari groups as well.
Shompans are, you can call it semi-nomadic tribes. When you call it semi-nomadic tribes, it means they don't have that benefits of the living style like us, who wear clothes, who can cook their food. They don't have exposure to education. No, their lifestyle is completely rely in the forest, in the jungle. And the main occupation for them, if I talk about, is hunting. What do they hunt? The animals in the jungle, okay? And fishing, of course, they do plantations. Maybe they rely on the Nicobaris. Nicobaris are the main group. We live in the coastal area of the Great Nicobar. We are exposed to the education as well, and our lifestyle is completely different than the Shompans. You're able to see us here. We have a voice. Shompen don't have a voice. As we all from the different tribes, we all have different dialects. You can't even call it language because nobody knows. Till now, nobody knows. Even till now, we are not able to even communicate with them because they have a different language, different dialect as well. So this is going to be very challenging for them. And their roots were from the jungle. Suppose you bring someone who has no interest to wear clothes like us. You bring them to a city and ask them to wear clothes. Do you think they'll adapt that culture? Definitely not. Their immune system is already made in such a way that they adapt to that environment. I think they're the least people who are not even affected by diseases, if you know, because their inhabitant is completely made of different. They live in a different. You can call this environmental system. Now, when Titus was explaining of, he gave an example that there was one captain or one head who wanted to develop, who wants to construct a playground. But what was the answer given? That you can't do because it's occupied by the government. So just imagine these people who don't have exposure to all the manifesto or something like where they can get their articles. Where would they go? If tomorrow someone said in front of your house, sorry, you cannot park your own vehicle here because that belongs to the government, will you like it? Definitely not. As I said again, we are not against the government project, but there is a limit to it. There should be a limit to it. It should not spoil the living lifestyle of people there. The map here. I did some homework. So this is the complete map of Great Nicobar, as you all know. So the one that is highlighted in the yellow color are the revenue land. Okay, revenue land. As per the community concerned, they have no problem with the development over here in the revenue land. They have no problem at all. So this pink color is representing the main wildlife sanctuaries are here. So the major part of the tribal who lives in the entire islands, we all lives over here in the coastal these area. It's expand like this because inside is a dense forest. Now when I talk about dense forest, that's explain that the Shompans lives here and few of them lives here. Okay, so now what is going to happen is this side, the revenue area, they over here, this is called the old Chinge, this point, old Chinge, where there is a river that that's a main part when these guys do their normal more of the transport slowly as per what the information is concerned. This part so far they have expanded till here. This should be only till here. Now they have expanded till here. When there is a construction, it is definitely not going to just end with phase 1. There will be phase 2 and there will be phase 3 to it. So what is going to happen is they are slowly going to expand, and they might even expand till here for the phase 2 coming. So right now, had a word with the brothers and just asking like what exactly is the main purpose of us over here. What they are saying is no one is against the development.
everybody would love to, see your areas. Everyone are going for schooling, but again, it should be on a limited area in this revenue area. So if this is considered as a revenue land, so it should be till here. The ecosystem of this area should not be disturbed, because somehow it is going to affect the other tribes as well. As we all know, after the tsunami of 2004, half part of this area has already submerged or destroyed. And my question is, this is located under the plate seismic stage 4 seismic zone, that is prone for an earthquake, tsunami as well. What is going to happen with that construction, massive project, if we are hit by such a natural disaster? That is my next question. There's also wildlife, because pink is represented by the wildlife sanctuary, so meaning is there are turtles here, different species of turtles. So slowly that the turtles are completely disappearing. So if the construction is going to happen, imagine where would those animals go, where would those turtles go? And I'm pretty sure not only turtles, there can be also another wildlife. वो एरिया में भी हम लोग जो नेशनल बर्ड होता है ना, मेगापोड बोलते हाँ, हैं, मेगापोड, वो जगह में भी बहुत है। Okay, so mainly because it's wildlife sanctuaries. This is उसमें बताया क्या है कि अभी मतलब डीनोटिफाई, अभी इन लोग ना बिना पूछ के 2 आइलैंड जहाँ हम लोग रहते हैं ना, जहाँ हम लोग का प्लान मेंजल और मेरो और लिटिल निकोबार, okay. क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनको यहाँ डीनोटिफाई कर दिया। फिर हम लोग का एरिया में वो भी बिना पूछ के हम लोग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर, मेंजल, मेरो और लिटिल निकोबार, जो भी हम लोग नहीं जाता, लेटर भी लिखा है, इसका रिस्पॉन्स भी नहीं दिया हम लोग का कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग का एरिया। तो इसकी लोग ने अभी काफ़ी टाइम चिट्ठी अभी लिखी है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी आप लोग को क्यों लगा कि दिल्ली आना ज़रूरी है और यहाँ पे आके जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलना और ये बात रखना ज़रूरी है? अभी आप सबने तो देखा, हम लोग ने भी वहाँ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, तभी आज तक भी हम लोग को अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिला कि वो लोग रुक रहा है कि काम चालू कर रहा है। लेकिन देख रहा है बहुत स्पीड से रिसर्च हो रहा है वहाँ में। एक्चुअली रिसर्च चलता है उसी के लिए होगा, नहीं तो उससे पहले भी आ जाना था। एक्चुअली अभी जैसा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो रिसर्चर काफ़ी अपना काम तेजी से बढ़ा रहा है। तो आई थिंक वो जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो उन लोग प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। वही किन से मिले हो अभी तक? The first thing, we met with the opposition leader yesterday, Mr. Rahul Gandhi, and he actually supported us with this. See, I'm not saying that he is involved in this, we just seeked his help. Okay, we seeked his help because we believe that जब इन्होंने पहले, जैसा उन्होंने कहा था कि पहले उन्होंने बहुत बार अप्रोच किया गवर्नमेंट को, and there were no response. So when you don't get a response, then what you do? You definitely take the next level of actions. So that is why that made us, we met Mr. Rahul Gandhi, and unke baad then we met also the welfare, the Congress welfare as well, and that's it. Yes, the Youth Congress. And So the Mahila Congress met a lot of Congress leaders. yeah, we met a lot of Congress leaders yesterday. So the meeting with My name is Bhaskar. I belong to the islands. I'm there for quite some time. See, their settlement started in the late 1960s when the settlers were. This is how you should start the story. They were very kind enough to give their land and to convert it into revenue land. Otherwise, it was all tribal area, and they, as tribals, they don't have demarcation of their own land, meaning that he does not have land. It's all tribal land, and they live out of it. They are living with nature, harvesting nature, and they are lovers of nature. So for them, everything is nature. Now they have given some of the land for the revenue thing, and then the tsunami comes. After the tsunami, there are 28 villages which were affected,
they were shifted into two settlements, Chingen and Rajiv Nagar. Where is their livelihood? They were living out of coconuts. They were not buying fish, they were hunting fish. They were having arcanaut, they were bartering. There was no money handling by them. Now they have to buy fish from the market because they are settled in two revenue villages where their livelihood is affected. So what do they do for their livelihood? Next question. They work as laborers. Even their right to employment is taken away. They had 15%, it became 12%, it became 8%. Now even in the 8%, example, him. He's a tribal boy locally, he qualified UPSC, he came but somebody from Shillong took his job. Correct? Yes. So this is, stretching their patience too much. Now you are coming with the project, transshipment port, set up a airport and set up a model village. Why? Security reasons. We have Mini Bay area, which is a naval settlement, which is about 3 square kilometers. You take 5, you take 10. If at all it is Security. for security reasons. Now, they have not been consulted. They have been cheated into giving NOC. They were not given the full profile of the project. And when they took NOC back, the government became aware that they are also wanting to protect their rights. Now, other than Nicobar is Shawmpans. Shawmpans are hunter-gatherers. They are nomadic. They need large space for their livelihood. They keep moving. They are, like he said, they are not only Shawmpans in one group. There are about 5, 6, 7 groups who are different from each other. Considering the environment. Imagine the flora and fauna you are going to destroy. 160 square kilometers of land, of which you are telling only 10 lakh trees. And this survey was done within 3 weeks. Survey of 10 lakh trees. I am telling it is 1 crore. You please contest. Why it is only 10 lakhs and not 1 crore? Or why it is 1 crore and not 10 lakhs? If you take the commercial value of the trees, one tree will fetch you between 3 to 3.5 lakhs of revenue. I am talking about hardwood. I am not talking about product or superior woods. Into 1 crore trees. Now you are going to cut the stumps of the trees. And then you need to uproot the roots. Once you uproot the roots, the whole substrata soil is loosened. One heavy rain will take all the soil into the sea. There you are causing damage to the underwater life. The corals are already bleaching because of global warming. It's a phenomenon everywhere. You see the Great Barrier Reef, you see the Indonesian side, everywhere it is being destroyed. So this is again going to destroy the habitat of various wildlife, onshore and offshore. Onshore, the long-tailed macaw, the mechabird, the owls. There are so many because you are going to destroy their habitat, the trees. And offshore, the turtles. Huge leatherback turtles come in huge numbers every year. And this is unique to Great Nicobar, Galatia Bay, wherein you are projecting a thing. Now what the government is envisaging? The turtles, a sanctuary for the corals, a sanctuary for the megaboats. How are you going to guide the turtles to go to their sanctuary?
you are going to replant, remove 16,500 colonies of corals and transplant them somewhere else. I don't know whose technology it is. Very surprising that this is happening. And then cutting off 10 lakh trees, 1 million trees, and replanting in Haryana and Madhya Pradesh. How is it going to end? Today we are talking about the Aravalli range. Important that we protect the Aravalli range. It's raining in Delhi today, the month of March. It's raining in Andaman today, in the month of March. It's raining in Chennai in the month of March. You see the climatic changes happening. See, we are totally against this project only because it is going to cause huge irreversible damage to the environment.